So safety data collection and graph plotting. विजुअल कंट्रोल सिस्टम जब प्रोग्राम चल रहा था तब हम लोग ये पॉइंट बार बार बोल रहे थे कि लीन में एवरीथिंग इज सी ओके, मतलब आंखों देखी. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट एनीथिंग, you don't have to announce anything, but just going around the area, you should be in a position to understand what the area is trying to tell you. Okay, the same thing is applicable for safety everywhere. That is why I just suggested to Accurate that please come out with safety displays for the person who is the operator and also for the persons who are outside that area, क्योंकि उनका एक्सेस हो सकता है. तो बोथ आर इंपॉर्टेंट. सो ग्राफ क्या हो सकता है? केपीआई के बारे में मैंने पहले 2 केपीआई के बारे में बताया था, एक है सिवियरिटी और एक है फ्रीक्वेंसी. मैं उसके साथ और एक कंपनी लेवल केपीआई आप लोगों को टॉपिक जब शुरुआत हुआ था तब बोला था, वो था हाउ मेनी डेज दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री इज वर्किंग विदाउट एनी एक्सीडेंट. तो मैंने सुंदरम क्लेटन में और कई कंपनी में देखा था, द नंबर ऑफ डेज गोज इन थाउजेंड्स, like 3000 days plus that no accident has happened in the company. Okay, so that is definitely something, I mean, one should feel proud of. A company, how much money they are generating revenue, ये जितना important है उससे ज्यादा important ये है कि कोई human injury हुआ है क्या नहीं, particularly सीरियस इंजुरी जो कि लोगों का मेजर इंजुरी, लिम्ब का इंजुरी, मतलब ऐसा कुछ हुआ है या तो कुछ हैजर्ड्स हुआ है, दे आर नॉट गुड थिंग टू रियली शो साइमल्टेनियसली विथ योर टर्नओवर. इट डजंट लुक रियली गुड ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी. तो सेफ्टी रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए? एक्सीडेंट, मेजर, माइनर और नियर मिस, ये भी होना चाहिए. और इसमें ये फॉर्मेट हम लोग रिकमेंड किए थे, डेट, जोन या सब जोन. ये तो शुरू में ही हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 में क्लियर कर दिए थे कि सारे फैक्ट्री में जोन, सब जोन, एरिया, लाइन में बांट देना चाहिए. जितना छोटा हिस्सा करोगे फैक्ट्री का उतना ही आपका इजी रहेगा फॉर कंट्रोल पर्पस. फिर मशीन एरिया, मशीन इक्विपमेंट ऑपरेशन, जिसके बारे में हम लोग सेफ्टी रिकॉर्ड ले रहे हैं. ऑपरेटर कौन सी था, मिशअप यानी एक्सीडेंट या तो इंसिडेंट जो हुआ था वो क्या था, उसका रूट कॉज क्या था. रूट कॉज करने के टाइम में हमेशा वाई एनालिसिस कीजिएगा प्लीज. देन काउंटर मेजर क्या है उसका, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेटेड एंड स्टेटस. तो ये एक ग्राफ है जो कि टेक्नोफोर्स से लिया गया है. और हमेशा याद रखिएगा ग्राफ में हमेशा ये एरो दीजिएगा, डाउनवर्ड मीन्स बेटर. तो इधर आपका जो है ये सिवियरिटी जो रेटिंग है एक्सीडेंट का, ASR, ये प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस में, और इस साइड में मंथ, इट इज अ मंथली प्लॉट. और हर एक पॉइंट के अगेंस्ट में इन लोग मेजर जो इवेंट हुआ था उसको उन लोग लिख रहे हैं. जैसे इधर एलन की ब्रेक करके एक्सीडेंट हुआ, फैन के साथ एक्सीडेंट हुआ था, इंजुरी व्हाइल अनलोडिंग शिफ्टिंग, इंजुरी व्हाइल स्पीड चेंज ऑन द पिलर ड्रिलिंग मशीन. तो और इस साइड में है फॉर्मूला, कौन मेंटेन कर रहे हैं ये चार्ट, टारगेट क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है. तो ये सारे जो ग्राफ्स है, इसको अगर देखा जाए तो खुश होने का खास कुछ वजह नहीं है, क्योंकि 2 occasions the company has had hit 0, but that does not mean that it again will not come. क्योंकि इधर कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, पूरा हैप्पीजर्ड डेटा दिख रहा है. That means that company should really launch a full-fledged company-wide awareness program. That is very important. Let us go to the next graph. Next graph is accident frequency rate, जिसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को
उस दिन बताया था। मैं फिर आपको बताता हूं कि फॉर्मूला एक्सीडेंट सिविरिटी का होता है टोटल मैन आवर्स ऑफ वर्किंग इन अ मंथ, एंड सिविरिटी है आई थिंक you have to convert that into days, huh? Please correct it, this is not right. Man days lost, hours में रिकॉर्ड करोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन when you convert that in terms of days, all right? And accident frequency rate में नीचे सेम है टोटल मैन आवर्स ऑफ वर्किंग इन द मंथ, और इधर लिखिएगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नियर मिस, एक्सीडेंट में मेजर माइनर दोनों ही लीजिएगा इंटू 10⁻⁶, दोनों फॉर्मूला में इंटू 10⁻⁶. दिस पर्टिकुलर ग्राफ मतलब इट इज ट्राइंग टू शो, आई मीन एज इफ इट इज ए ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड कंक्लूड करना अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मैं बताता हूं, जब स्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम लिया जाएगा, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ ये ट्रेंड का क्या रिश्ता है. तो उधर ये बताया जाता है कि कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश करने के टाइम में लगातार नीचे अगर एक पॉइंट जाता है कंटिन्यूअसली सम 5 to 6 points, then you can say it is a downward trend. लेकिन इधर एज ए होल इट इज कमिंग डाउन. बट देखिए, पहला एक नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया. It looks like a sinusoidal wave. So here also it is not showing any trend. We have a problem here, okay? And that problem is saying that you should be again launching a company-wide initiative to take care of the safety issues. तो रिकॉर्ड कुछ इस तरीका से सेफ्टी रिकॉर्ड हम लोग सुझाव देते हैं. डेट, जोन, सब जोन, एरिया, मशीन, इंजर्ड पर्सन का नाम क्या है, मिशअप क्या हुआ था, आफ्टर रैपिंग ऑफ हीट शील्ड स्लिप, एज ऑफ द स्ट्रिप्स कट हिज बॉडी. इधर व्हाइल हैंडलिंग द स्ट्रिप्स लेफ्ट हैंड थंब डीपली कट. कौन सी जगह में, बैक साइड ऑफ द राइट फुट नी. इधर लेफ्ट हैंड थंब. Was not wearing gloves while handling strips. Hand gloves was not owned. Current countermeasure: follow safety rules. Ensure use of hand gloves while handling strips. लोग जल्दी में होते हैं and they forget it. तो हमें देखना पड़ेगा कि हैंड ग्लव्स क्या नजदीक में रखा जाता है, and still he is forgetting. सो इन दैट केस सेफ्टी ऑडिट के दौरान वो जगह में ज्यादातर ऑडिट करना है, बार बार करना है, प्रायोरिटी एरिया में उनको फीडबैक देना है कि दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी. एंड मैंने बताया था आपको पहले भी कि आई ऑलवेज सजेस्ट दैट फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन हु आर रिपीटेडली डिफॉल्टिंग, प्लीज इन्वॉल्व देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग द अवेयरनेस. ओके, बिकॉज ए पर्सन शुड रिमेन सेफ not only for himself but also for his family. So it really helps. I'm sorry, this particular this thing is from Dynacare. Okay, so like that there is another this thing example, and this example is hand grinder while cutting 3 mm CS sheet using hand grinder, left hand finger injured. First aid provided, no safety guard present on the grinder, and gloves not used, and preventive action: safety guard for grinder installed and use of hand gloves started. Incidentally, drilling machine में hand gloves is not a recommended use, particularly those type of hand gloves which actually are oversized and they do not cling to the fingers, because in drilling machine it is rotating member, so any loose part, extended part, they tend to get wrapped with the drill bit
and it is pulled. And so many accidents of hand injury, breakage of finger has happened because of that. So you have to be very careful. Hand gloves is not the solution for every case. All right, I think I'll show you a couple of इसके साथ जुड़े हुए कुछ counter measure which are very important. ये जो cases मैं आपसे share करूँगा, they have been shared by Mr. C. Narasimhan, late Sri C. Narasimhan, and you can just take a look at it, and then it is really quite insightful. इधर दिया गया है कि ग्राइंडिंग मशीन में सेफ्टी गार्ड का पोजीशन क्या होना चाहिए. You can see that rigid guard provided to avoid injury to the abdomen. This is the place actually जहां पर ऑपरेटर खड़े होके काम करते हैं. तो his abdomen, belly, actually trained to go forward, and there actually there is always a chance that the abdomen may get injured. So now, because of this, he cannot move beyond a certain distance. Evidence of operating the drilling machine with gloves in hands, okay, which may lead to serious injury. Okay, ये machine में ही आप अगर देखोगे, आपको नजर में आएगा कि there is a evidence right here where the levers are here. You can see the hand gloves. उसका मतलब ये ऑपरेटर हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं जो उनको यूज नहीं करना चाहिए. सो दिस में लीड टू सीरियस हैंड इंजरी. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कंपनी को, इधर जिन लोग मौजूद है इधर, प्लीज टेक फोटोग्राफ ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस एंड शेयर विथ अस. सेंड योर पावर पॉइंट फाइल गिविंग द नेम ऑफ द मशीन, टाइप ऑफ द मशीन, अनसेफ प्रैक्टिस क्या नहीं होना चाहिए. Okay, and then prepare. It will be good if you can take 10 cases with picture and send it to Mr. Parag Kulkarni. I want to take it for review in the next review. Okay, this is a challenge to all of us engineers. Remember that अगर एक भी एक्सीडेंट होता है जिसके पीछे अगर हम थोड़ा सा ध्यान के साथ काम करते, अगर एक्सीडेंट रोक सकता था, तो ये बहुत बड़ा था. परमानेंट मार्क हो जाता है एक आदमी के जिंदगी में, क्योंकि मैं कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया. सो प्लीज गो अहेड, टेक योर कैमरा मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले प्रॉब्लम था, अभी प्रॉब्लम नहीं है. सो टेक फोटोग्राफ, प्रिपेयर पावर पॉइंट स्लाइड्स, सेंड इट टू मिस्टर कुलकर्णी. दिस विल बी माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. कंपनी वाइज कीजिएगा, नॉट फॉर ईच मेंबर. एज ए ग्रुप यू कैन डू फॉर ईच कंपनी. This is another set of example. Accumulation of loose cloth near revolving machine. इधर ये जॉब मूव करता है, लेकिन आप देखो इधर लूज क्लॉथ है. शायद ये क्लीनिंग के लिए यूज करता है, and without paying attention, he has kept it here, which is absolutely wrong. He should not have done that, क्योंकि this may lead to wrapping of the cloth, and maybe the job will come out. Who knows? And this is a heavy job. Evidence of operating this, I think I have already shown you. Let me show you another one. Wrong method of operation posing for, this is not, ignore this word. This may lead to injury. See the way this guy is holding by one hand the lever of the machine, and by another hand he's holding the job. This should not be the case actually. The correct method of operation with two hand switches is this. Okay, so both the job is clamped properly. He has been given a jig, and now his both hands are engaged now. Two hand switch, both hands are engaged now. It is applicable for press stop also. Your hand should be engaged in such a manner that even if you want, you cannot take your hand near the dynamic member of the machine. That is very, very risky. So I want you to do this kind of thing. Please come out with this thing and then come out with displays. This is another very good this thing, typically coming out with a man like Mr. C. Narasimhan. I'm grateful to him.
he has shown here that right use of flush type of switch and right use of mushroom type emergency switch. हम बिना अंडरस्टैंडिंग का मशरूम स्विच यूज करते हैं जहां मशरूम स्विच यूज नहीं करना चाहिए. देखिए जैसे इधर मशरूम स्विच यूज किया है जो कि इमरजेंसी टाइप ऑफ स्विच है, और ये करेक्ट यूज है जहां पर आप इमरजेंसी स्टॉप के लिए आप मशरूम टाइप स्विच कर रहे हो जहां पर आपको दबाना है. और इधर क्या होगा, साइड में है, साइड में आते जाते के टाइम में कहीं भी कभी भी ये दबाव के कारण बंद हो सकता है, एंड दैट में लीड टू ए सीरियस एक्सीडेंट. फ्लश टाइप स्विच साइड में है तो फ्लश टाइप स्विच देंगे, अगर धक्का भी लगे फ्लश टाइप स्विच में कुछ नहीं होगा बिकॉज दिस इज फ्लश्ड with the surface. So this can be used for cycle switch on, and for the cycle for the switch on you can use this.